Good morning, students. It is our science video, part 1. In this chapter, before starting our video, you have to borrow your book written by P.K. Tiwari. And here is the content of our book. There are 18 chapters. First, we have to discuss about nutrition in plants. Okay? So, here are 3 definitions: nutrient, food and nutrition. So what is nutrient? We can understand with an example, like जैसे when we कोई भी हम when food we intake, so we get energy from it. So what the food consists? It consists carbohydrate, vitamins, minerals. The जो फूड जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन सब में ये सब प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, फूड एंड विटामिन. तो ये सब क्या हो गए? न्यूट्रिएंट. और हमें न्यूट्रिएंट से क्या मिलती है? एनर्जी. ओके. So according to the definition, food comprises various components such as carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. These components are essential for human body to enable it to carry all life process. वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि फूड में ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं फॉर ह्यूमन बॉडी टू एनेबल it to carry all life process. These all components of food are called nutrition. And what is, we are talking about food, so what is a food? वो कोई भी substance that provide necessary requirement to our body. वो कोई भी substance, it may be fruit or vegetable, जो वो हमें necessary requirements provide कराए, जिसकी वजह से हमारी body work करती है, cells जो body के cells हैं they work, it is a food. Next is nutrition. So now what is nutrition? Nutrition is the process by which an organism obtains nutrient and uses them for the growth, development. So what is nutrition? Nutrition is the process by which an organism obtains nutrient and uses them for the growth, development and maintenance of the body. So what does a nutrition mean? न्यूट्रिशन मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड अपने न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी मोड फॉर देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, दीज आर नोन एज द न्यूट्रिशेंट. सो व्हाट डज example, like when we intake a food, we get nutrient from it. We already discussed above here. So what is nutrition? Whenever we intake a food, we get a nutrient from the food and the process begins, which help in maintenance of growth, development and maintenance, so called as nutrition. Next is modes of nutrition in organism. लाइक जैसे हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, हम अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, इसका काफ़ी सारे मोड्स होते हैं, हम किस तरीके से अपना खाने को ऑब्टेन करते हैं. ऐसे ही प्लांट्स हैं, ये हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें. सो 2 टाइप्स के थ्रू जो है वो प्लांट ऑब्टेन करते हैं अपना फूड. दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. एंड हेटेरोट्रॉफिक इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू पैरासाइट, सैप्रोफाइट, symbiotic and insectivorous. So first is autotrophic. We can clearly understand from the name autotrophic. Auto means self, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. Now अपना खाना कौन खुद बनाते हैं? Students, you can easily answer this because all green plants, I am not talking about non-green plants. There are many types of non-green plants also, but we are talking about green plants. So those green plants which can make their own food with the help of sunlight, carbon dioxide, water, it's called autotrophic. Like here in a picture you can easily understand. Suppose it is a green plant like grass, money plant, tulsi. They are all green trees. I am just giving you an example. So they take energy from sunlight, carbon dioxide from air and water and mineral from soils through the root, जो इनकी जड़ होती है. Okay. So
ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन according to the definition, organisms which make their own food with the help of carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll. Chlorophyll is present in the leaves are called autotrophs, and the mode of nutrition through which they intake their nutrition is autotrophic nutrition. Example is green plant, जो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उन सबको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऐसे ही नेक्स्ट आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन organisms which cannot make their own food and depend on other plant or other animal for their food are called heterotrophs. Suppose like human beings and animals, we are depend on, example जैसे human beings, हम ऑक्सीजन किससे लेते हैं? प्लांट से. So we are depend on plant. Example like non-vegetarian. So we are depend on plants for the oxygen. हम ऐसे ही जैसे some people have different taste. कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई वेजिटेरियन. तो नॉन वेजिटेरियन के लिए ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन एनिमल. So we are dependent on plant and animal both. ऐसे ही some plants हैं which are depend on other organisms. We will discuss in heterotrophs. Organisms which cannot make their own food and depend on plants or other animals for their food are called heterotrophs. Hetero means other, and troph means nutrition, means those plants which depend on other plants like human, dog, lion, cow, etc., and all non-green plants like yeast and mushroom. This mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. Okay. So what is autotrophic nutrition? Which make their own food, and heterotrophic nutrition which obtain their food from other plant. Heterotrophic like mushroom. आप स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा मशरूम जो कोई मैशी एरिया में ग्रो करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा मैशी एरिया है, कोई डेड प्लांट्स, कोई डेड ट्री, सो दे ग्रो above that surface, so they are heterotrophic. ऐसी heterotrophic में parasite, saprophyte, symbiotic and insectivorous. Next is autotrophic nutrition which is photosynthesis. मैंने आपको बताया था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि सेल्फ अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ न्यूट्रिशेंट, और द मेजर एग्जांपल इज ग्रीन प्लांट्स. So how green plants make their food? With the help of photosynthesis. Now, what is photosynthesis? Before starting the process of photosynthesis, आप लोगों ने देखा होगा अपने घर पे, स्कूल में कोई भी जो गार्डनर होता है वो प्लांट की कितनी केयर करता है. They water the plant. Why? Because water is the major component for plant and human beings too. Na? And they add manure, fertilizers. What is manure and fertilizers? Like ह्यूमन बींग्स का फूड, हम फूड किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर कीपिंग अस हेल्दी. ऐसे ही जो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं. फर्टिलाइज़र प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड मैन्योर इंक्रीजेज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट इन द प्लांट्स. नाउ our topic is photosynthesis. You can easily understand from this diagram. Photosynthesis, green plants, the kitchen of the plant, जहाँ पे photosynthesis की process पूरी occur होती है, जहाँ पे where green plant make their own food, they make their own food in leaves because of chlorophyll. Chlorophyll is a green pigment जिसकी वजह से जितने भी green plants हैं उनका कलर green शो होता है. Why? क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं इन द लीव, जिसकी वजह से प्रोसेस स्टार्ट, फोटोसिंथेसिस स्टार्टेड. सो ग्रीन प्लांट, ग्रीन लीव्स, क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, रिलीजेस ऑक्सीजन एंड water and minerals from the soil. So the photosynthesis process occurs. Now according to the definition,
The process by which green plants make their own food. What type of food they make? Glucose from carbon dioxide, water in the presence of sunlight, chlorophyll is called photosynthesis. Photo means light. Light here represents sunlight. So, photo means light and synthesis means combine. Now, according to the reaction, you can easily understand carbon dioxide CO2 it's a gas जो कि एयर में प्रेजेंट होती है एंड वाटर वो जब कोई भी हम लोग प्लांट्स को वाटरिंग देते हैं दैट वाटर सनलाइट क्लोरोफिल कौन सा प्रोडक्ट बना ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड एनर्जी सो इट इज़ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नाउ like green plants make their own food, we already discussed about it, for their own growth and for reproduction, and the food prepared by plants is eaten by herbivores such as goat, deer. Therefore green plants are producers because they produce food for the whole animal and the human beings. Producer means जो food दूसरों के लिए प्रिपेयर्ड करते हैं लाइक ग्रास ईटन बाय अ काउ. Cow is a herbivorous animals which eat greeny leaves plant. So the green plants are producer because they make their food for the herbivorous animal. So it is our video of autotrophic nutrition. In next video we will discuss about heterotrophic nutrition, their types. I hope you understand. Thank you.